So again, good morning students. I'm starting it again, the same chapter, the address, and we will continue from here, the next page. So we have done yesterday up to only me. Now what happened? We saw that the author, she finally arrived at that place where she used to live in the past, okay, at the time of war or before war. But now things have changed. And one more thing we have seen in this chapter, first passage, that ultimately both of them, they recognized each other, that yes, she is the same girl, or yes, she is the same Mrs. Darling, regarding whom my mother was telling me. So let us start from here. A door opened and closed in the passage behind her. A musty smell emerged. So, a musty smell emerged out of the house, Mrs. Darling's house. I regret I cannot do anything for you. Who said this? Mrs. Darling said this. She mentioned this when she recognized that yes, she is the same girl, or she is Mrs. S. daughter. Then she became very panicked. Why? Because she understood that she might have come to receive the luxurious items and other items that her mother had left years and years ago. So, of course, she didn't want to give it back to them. So, what she said, I regret I cannot do anything for you. Then the author replied, I have come here specially on the train. I wanted to talk to you for a moment. Then Mrs. Darling said, It is not convenient for me now, said the woman. I can't see you another time. Now, can you imagine that someone is coming from far distance on train just to see those things, and the lady is responding that I cannot help you right now, another moment, as if that she is the never abini baad mein. She nodded and cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. Means she not only regret, but what she did, she closed the door. I stood where I was on the step. The curtain in front of the bay window moved. Someone stared at me and would then have asked what I wanted. Oh, nothing, the woman would have said. It was nothing. I looked at the nameplate again. Darling, it said in black letters on white enamel. So finally, when stepping back, she confirmed that yes, this is the same house. And on the jam, a bit higher, the number 46. And number 46 played a vital role. Means that number 46 actually was her address. So what was written over there? Darling, number 46. And her mother, author's mother, she had given the same address. So she matched it. As I walked slowly back to the station, I thought about my mother, who had given me the address years ago. It had been in the first half of the war. I was home for a few days, and it struck me immediately that something or other about the rooms had changed. I missed various things. My mother was surprised. I should have noticed so quickly. Then she told me about Mrs. Darling. I had never heard of her, but apparently she was an old acquaintance of my mother, whom she hadn't seen for years. She had suddenly turned up and renewed their contact. Since then, she had come regularly. Every time she leaves here, she takes something home with her, said my mother. She took all the table silver in one go. See, what were the items that she has taken, Mrs. Darling, she has taken. She took all the table silvers in one go, and then the antique plate, not the normal one, students. Rather, the antique plate that hung there. She had trouble lugging those large vases, flower vase and other vases. And I'm worried she got a crick in her back from the crockery. Means all those antique items, special items and beautiful items she has carried away with herself to her house, Mrs. Darling. Or on what account she carried away that
any time a circular may arrive, you have to leave the place. So it will be better if we'll keep all those antique items at my house. And apparently what she did, Mrs. S means author's mother. Of course, anyone would want to protect the items. So apparently, what she has done, she has shifted all those items, antique items and relic, to Mrs. Darling's house. And what were the items that she has given? You may see here that she took all the silver table and antique plates, crockery, vase, and other things. My mother shook her head pityingly. I would never have dared ask her. She suggested it to me herself. She even insisted she wanted to save all my nice things. See how Mrs. Darling convinced मिसेस एस, ऑथर की मदर को मिसेस डॉर्लिंग ने कैसे कन्विंस किया था दैट आई वॉन्ट टू सेव योर एंटिक आइटम्स एंड रिलिक्स. शी हैज़ मेंशन्ड हियर, आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, शी सजेस्टेड इट टू मी, शी इवन इंसिस्टेड शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स. तो ये जो झांसा दिया है कि हाँ भैया आपके सारे अच्छे से सामान को हम लोग रख लेंगे, सामान को अच्छे से सेफ रखेंगे, और ये सब झांसा दे दे कि व्हाट शी डिड, शी केप्ट ऑल दोज इम्पॉर्टेंट आइटम्स. इफ़ वी हैव टू लिव हेयर वी शैल लूज एवरीथिंग, शी सेज. एक ही बात शी ऑलवेज रिपीट की, एनी टाइम सर्कुलर में काम, आप तो जानते हो इट्स टाइम ऑफ वॉर, तो यू हैव टू लीव ऑल दोज आइटम्स and you may lose everything. That's why it will be better if we keep all those items at my house, and when the odd situation, the war will be over, you may come back and give it back to, sorry, you may take it back it from us. Have you agreed with her that she should keep everything? I asked. अब जब इसकी मदर ने ये स्टोरी उसको बताई अपनी बेटी को, that yes, why I shifted all my important items to her, then she said that have you agreed with her that she should keep everything? Means it's okay, but crockeries, spoons, these are very basic things, and you finally agreed on with her that yes, you should keep everything. I asked. As if that's necessary, my mother cried. It would simply be an insult to talk like that. And think about the risk she is running each time she goes out of our door with a full suitcase or bag. Now, what was the excuse that mother gave? Mother gave that you are thinking that should I ask her or she directly asked it to me. But just imagine, mother ने क्या excuse दिया? She said एवरी टाइम जब वो हमारे कमरे से निकल के जाती थी तो शी ऑलवेज यूज टू कैरी अ सूटकेस, पूरा कंप्लीट फुल सूटकेस ले जाती थी. तो कैन यू इमेजिन, वो अपनी डॉटर को कन्विंस करी है कि कैन यू इमेजिन कि वो कितना रिस्क लेके जाती होगी. एनी वन वुड आस्क कि आप ये बार बार क्या लेके जाते हो, उसको कोई पकड़ भी सकता था. तो दीज वर द एक्सक्यूजेज. एक्चुअली मदर उसको दे रही थी, मदर उसको नहीं दे रही थी, खुद को भी कन्विंस कर रही थी कि ये सारे इतने सारे रिस्क लेके उसने हमारे सामान को रखा है. हर बार वो घर से जाती थी तो क्या जाती थी, सूटकेस और बैग जो पूरा कंप्लीट फुल होता था. तो यहाँ पे दो सेंस है, आप अगर थोड़ा सा ह्यूमर भी यूज़ किया है कि मतलब जब जाती है तो आपके घर का कुछ सामान लेके जाती है एंड स्टिल यू आर कन्विंस्ड कि हमारी सेफ्टी के लिए कर रही है. मतलब हाउ कॉन्ट्ररी, जब वो आपके घर से जा रही है then she is taking complete full suitcase and still you are convinced that yes, after all she is doing these things for me, मेरे लिए कर रही है. तो if she has done all those things for you only, then she must return those relics, antique items to you. But she didn't do so. My mother seemed to notice that I was not entirely convinced. Yes, this is of course it's a very lame excuse कि जब भी वो जाती है हमारे घर से वो पूरा कंप्लीट सूटकेस लेके जाती है. सो शी इज़ नॉट कन्विंस्ड प्रॉपरली दैट मदर, यू कैन नॉट से दैट शी इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ रिस्क. आउट ऑफ दिस रिस्क व्हाट शी इज़ गेटिंग एवरी टाइम शी विजिट्स अस, शी इज़ टेकिंग अ कंप्लीट सूटकेस. तो इतना छोटा सा रिस्क और इतना सारा फ़ायदा, तो एनी वन वुड वॉन्ट टू टेक द रिस्क.
So, author, she is not completely convinced, and mother seemed to notice that she was not completely or entirely convinced. She looked at me reprovingly, and after that, we spoke no more about it. Means she understood that my mother, or because आप अगर कोई काम कर चुके होते हो, and if you cannot make any further amendments, no further changes, then with lame excuses or strong excuses, you have to only believe it, because further discussion is waste. If they will discuss a lot, they will argue a lot, then it is a waste of time, because she has already given it to her and she is trying to convince हो रही है बेटी तो ठीक है, otherwise क्या कर सकते, because you have already spent or given your important item, antique item, everything. Meanwhile, I had arrived at the station. देखो अबाउट इट तक क्या था, वो उसका पास्ट का कलेक्शन, ठीक है. अभी वो जब उसके घर से निकल रही तो उसका प्रेजेंट था. उसके बाद ऑल दोज ये कन्वर्सेशन एंड अदर थिंग्स, दीज वर द इंसिडेंट ऑफ पास्ट. सो सडनली द इंटायर स्टोरी रन्स इन फ्लैशबैक. तो स्टोरी कैसे रन करी है, प्रेजेंट पास्ट. तो प्रेजेंट में उसके घर गई है. व्हेन शी वाज रिटर्निंग बैक, तो स्टेशन तक जाते जाते वो आप ख्याल जो आता है, तो द ऑथर शी हैज़ नरेटेड दिस. ये कोई लाइव कन्वर्सेशन नहीं है, तो ये पास्ट में है कि मदर कैसे उसको कन्विंस की कि यस मैंने क्यों दिए हैं. अगेन प्रेजेंट में आ जाता है. फ्रॉम वेयर, मीनवाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे. इट मीन्स she was thinking all those conversation with her mother, that how her mother convinced her, and she was coming back to station because Mrs. Darling, she was not ready to entertain her. She said that some other day. तो आप ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते ना. तो while coming back, she didn't notice other things over there. Rather, she was completely engrossed on those statements or conversation, and she came back to station. I was walking in familiar places again for the first time since the war. Means after war they have never arrived, and she was walking in the familiar places. But I did not want to go further than was necessary. I didn't want to upset myself with the sight of streets and houses full of memories from a precious time. Yes, these lines, listen, what happened, children? She had a very beautiful memory with that place before war. She had a very beautiful memory with that place before war. And what happened after war, she is coming here for the first time, and she saw that everything has changed. अब आप एक सिंपल सा बात समझो, दैट समथिंग इज़ वेरी प्रीशियस टू यू, आपको बहुत पसंद है, और बहुत दिनों बाद जब आप उसको देखो और वो बिल्कुल आपको जैसा पसंद था वैसा नहीं रहे, तो आई विल नॉट से एंगर, बट एक डिसअपॉइंटमेंट कहीं ना कहीं, अ वेरी स्मॉल पिंच occurs. A small amount of disappointment is there in someone's heart, everyone's heart, किसी के भी heart में वो disappointment होगा. So what happened here, that she has written, I didn't want to upset myself. She has mentioned it clearly that I didn't want to upset myself with the sight of streets and houses full of memories from a precious time. In the train back, I saw Mrs. Darling in front of me again, as I had the first time I met her. It was the morning after the day my mother had told me about her. I had once got up late, and coming downstairs, I saw my mother about to see someone out, a woman with a broad back. Now when finally she sat on train, then she remembered that what was the last time when I have seen her. Then she remembered that yes, I have seen her once upon a time when she entered our house. I have seen her once upon a time when she has entered our house, and she remember all those things, that yes, this was the time when I have seen her. So a woman with a broad back. So what is the she is reminding here that I have only seen her, that yes, she was a woman
with a broad back. "There is my daughter," said my mother. "Mother," she beckoned to me. The woman nodded and picked up the suitcase under the coat rack. She wore a brown coat and shapeless hat. Now these were the memories that she had. वो ट्रेन में बैठ के ये वो मेमोरीज़ है वो जो रिमेंबर कर रही है, याद कर रही है. कौन सा याद कर रही है कि वो जब एंटर की थी छोटे में, दैट दीज वर द मेमोरीज. "Does she live far away?" I asked, seeing the difficulty she had going out of the street with a heavy case. "In Marconi Street," said my mother, "number 46. Remember that." तो एट दैट टाइम व्हेन अगेन बचपन में उसके कुछ रेमिनिसेंस है. रेमिनिसेंस में क्या है कि वो इतना भारी सूटकेस लेके जा रही थी. तो एक बच्चे का क्यूरियोसिटी क्या होता है कि इतना भारी सूटकेस लेके कोई आ रहा है, इसका मतलब बहुत दूर है, बहुत दूर से कोई आ रहा है. तो डज शी लिव फार अवे, बट द पॉइंट वाज दैट कि शी वाज नॉट लिविंग फार अवे, रादर शी वाज टेकिंग एट द टाइम ऑफ इन चाइल्डहुड शी वॉज नॉट अवेयर कि वॉर का सिचुएशन है एंड दे आर टेकिंग द रेलिक्स आइटम्स एंड शी स्पेशली टेकिंग. हमें कभी भी घर को छोड़ना पड़ सकता है. तो दीज वर द कॉन्सेप्ट दैट वाज नॉट क्लियर टू हर एट दैट टाइम, एट द टाइम ऑफ वॉर. मतलब जब वॉर चल रहा था, प्री वॉर सिचुएशन. प्री वॉर देखिए, द इंटायर चैप्टर इज डिवाइडेड इन टू पार्ट, प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर. प्री वॉर मतलब वो वॉर के पहले वो लोग कैसे पैनिक थे, हाउ दे शिफ्टेड, हाउ दे चेंज्ड. एंड पोस्ट वॉर मीन्स अभी वो वापस आके देख रही है व्हाट वर द चेंजेस. तो वॉर के चलते जो है वो सारा आइटम्स ले जाती थी. देन एज अ चाइल्ड, एक छोटे बच्चे की तरह कोई भी एनीवन वुड आस्क द सेम क्वेश्चन दैट मदर डज शी लिव सो फार, इतना फार कि वो इतना हेवी सूटकेस लेके जाती है. एंड शी वॉज नॉट, शी वॉज वेरी स्मॉल एट द टाइम एंड शी डिडंट अंडरस्टैंड कि वॉर हो रहा है, होगा तो हमें ये सारी चीज़ों को हटाना पड़ेगा, हमें चेंज करना पड़ेगा. सो एट दैट टाइम ओनली हर मदर सेट द एड्रेस. वो एड्रेस उस वक्त बोली थी, इन मार्कोनी स्ट्रीट. वो कहाँ रहती है? मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46. रिमेंबर दैट. एंड वी हैव सीन, इसके पहले भी वी हैव सीन दैट वेयर डज शी लिव. इन मार्कोनी स्ट्रीट का तो मेंशन नहीं था, लेकिन नंबर 46 वेयर वाइट ब्लैक इनमेल से मिसेस डॉर्लिंग लिखा हुआ था. आई हैड रिमेंबर्ड इट सिंस देन. वो नंबर 46 ऑथर के माइंड में है. आई हैड रिमेंबर्ड इट बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर. चाइल्डहुड में उसकी मदर ने उनको बताया था उनका एड्रेस, और उसके बाद फिर पोस्ट वॉर शी इज़ गोइंग बैक देयर, means after the war is over. But I had waited a long time to go there. Initially, after the liberation, I was absolutely not interested in all that stored stuff, and naturally, I was also rather afraid of it. Afraid of being confronted with things that had belonged to a connection that no longer existed, which were hidden away in cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their places again, which had endured all those years because they were things. Very beautiful line, full of emotions. First, she was not ready to see those relic items. Why so? Because उसको लगा कि वो कोई बहुत प्रीशियस चीज़ है. Due to odd circumstances, something. सपोज़ करो आपके साथ कोई व्यक्ति है, ऑड सिचुएशन है. वो व्यक्ति है बिकॉज ही इज़ अ लिविंग बॉडी. ही में परसिस्ट, ही में इंसिस्ट कि नहीं ठीक है, कितना भी ऑड सिचुएशन होगा हम आपके साथ रहेंगे, ठीक है. बट आपका कोई बहुत प्रीशियस थिंग है, कुछ बहुत प्रीशियस आइटम्स, बहुत प्रीशियस चीज़ें हैं, और बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाए, आप उसको कहीं रख दो, ठीक है. एंड दे कैन नॉट प्रोटेस्ट बैक. हो सकता है साइमल्टेनियसली, थोड़ा सा अगर इमोशंस के साथ हम लोग सोचें तो साइमल्टेनियसली वो चीज़ें भी आपके पास रहना, क्योंकि यू टेक प्रॉपर केयर ऑफ देम, यू टेक वेरी प्रॉपर केयर ऑफ देम. तो मे बी इट इज़ पॉसिबल कि वो चीज़ें भी हमेशा आपके पास रहना चाहें क्योंकि आप उनका बहुत ख्याल रखते हैं. बट दे कैन नॉट कम बैक टू यू बिकॉज दे आर नॉन लिविंग थिंग्स. सो शी डिडंट वांट टू कन्फ्रंट दैट. वो उसको कन्फ्रंट नहीं करना चाहती थी, सामना नहीं करना चाहती थी. क्यों सामना नहीं किया? बिकॉज उसकी मदर ने वो सिल्वर स्पून, वो वॉश
और ऑल दोज कार्डिगन एवरीथिंग को बहुत ही आराम से प्रीशियस वे में बहुत ही अच्छे से रखा था। अभी वो उसको एकदम से इतने सारे सालों के लिए टू लीव ऑल दोज आइटम्स एक बार भी देखा नहीं, तो वो चूँकि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, कोई उसको बहुत बुरे तरीके से यूज़ कर रहा है, क्यों प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? बिकॉज दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। एक मूवी का एक क्लिप मैं आपको इसमें एंटरटेन करने के लिए बताना चाहूँगी। ऑल्दो नॉट सीन बट अ वेरी स्मॉल पार्ट, आई डोंट नो, टॉय स्टोरी का कोई था, तो उसमें वो बच्चा एक है जो टॉयज़ को बहुत ही अच्छे से रखता है इमोशनली, और उसमें शायद सारे टॉयज़ लाइवली हैं। बीच में क्या होता है कि एक टॉय मिस हो जाता है, वो किसी और के पास चला जाता है, एंड द टॉय वॉज नॉट रेडी टू गो ओवर देयर, क्योंकि वो केयर, वो इमोशन जो बच्चा उसको देता था, वो टॉय को वो सेकंड पर्सन जो उसको लेके जाएगा, चोरी वोरी करके जाएगा, शायद ही विल नॉट गिव। तो दे डू हैव इमोशंस। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर की ब्यूटी यही है कि वो नॉन लिविंग थिंग्स में भी क्या ढूंढ लेते हैं, लाइफ ढूंढ लेते हैं। और यहाँ पे वो बहुत अच्छे से लिखती है दैट all those items are waiting in vain until they were put back in their places again. All those items जिसको बहुत प्रीशियसली मेरी मदर केयर करके रखती थी, they all are waiting, eagerly waiting कि फिर से मैं अपने मालिक के पास जाऊँ और उसी जगह पे, जिस कबर्ड में जहाँ पे वो मुझे सजा के रखती थी, वहीं पे रखा जाऊँ। Which has endured all those years because they were things. Endured means होता है बर्दाश्त करना। तो they have endured these things. Why they have endured these things? They have endured these things only because they are things. अगर वो living being होते तो वो तुरंत चले आते साथ में. So endured because they were things. So I would love to stop here today. And different meanings आप इसमें से देख लें, and at the same time if you have any query then you can ask it to me. But do remember students, in English literature or in any subject there is no substitute of complete textbook reading. आप इसका कहीं पे भी वीडियो में 2 मिनट का समरी सुन लोगे, then you may write things, it is okay, I understand, but when you will read the text properly, because this is not novel कि आपको 5-6 दिन 7 दिन, if you don't have a reading habit then it will take 5 to 6 days to read it for you. So small chapters है, split करके पढ़ा रहे। टेक्स्ट बुक रीडिंग का कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता। नेवर गो फॉर समरीज। समरीज में आप कितना भी जानोगे फिर भी कुछ छूट जाएगा और वो इमोशंस नहीं कंटिन्यू हो पाएगा। सो आई वॉन्ट यू ऑल टू रीड द टेक्स्ट 25 मिनट्स एवरेज। आप एक दिन भी अगर 2-3 पेजेस पढ़ रहे हो तो इट्स गुड, और वो आपके दिमाग में हमेशा, आपको फिर एग्ज़ाम के टाइम पे कुछ भी पढ़ के नहीं जाना होगा। एंड वाई आई एम इंसिस्टिंग हेयर, क्योंकि अभी पैटर्न चेंज हो गया है। पैटर्न चेंज हो गया इन द सेंस कि ऑफकोर्स इफ़ एनी वन विल मेक क्वेश्चन पेपर तो अभी लेंदी क्वेश्चंस दे नहीं सकते। सो व्हाट वी विल डू, एकदम मार्कोनी स्ट्रीट, नंबर क्या था 46 था। सो टेक्स्ट बुक रीडिंग इज़ नेसेसरी। आई इंसिस्ट you all to read the text properly. Yes, some of you are from Hindi medium, definitely जिसको काफ़ी दिक्कत हो रही होगी समझने में। I am trying to continue, बीच बीच में मैं just for you people I am translating it as well, because as a teacher I have to see both the students. Of course English is a language that must be taught in English only properly, I agree, but at the same time, you know now, if, the time has changed, the new education policies, they have said that the students, they are completely, they have the authority to learn anything in any language, their language. So language का वो importance घटा दिया गया है. So you too have right to understand things. If you don't understand, you may ask it to me. Time is changing, and for those who understand English, it's good. Do read these things, and if you have any query, ask it to me. So that's all for today. Hope to see you in the next week. Thank you, students.